अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ऊंचे पहाड़ पे मधुबन है, मधुबन में बाबा का आसन है। मधुबन में बाबा का आसन है। बाबा सबसे निराले, सबको प्यार करने वाले। बाबा सबसे निराले, सबको प्यार करने वाले। सबके दिलों पे उनका शासन है। मधुबन में बाबा का आसन है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे मधुबन है, मधुबन में बाबा का आसन है। संदली पे बैठ बाबा मुरली सुनाते, मुरली सुना के बाबा सबको बुलाते।
ज्ञान की गंगा योग की यमुना मधुबन में दिन रात बहाते। उनका आश्रम प्यारा प्यारा अपने हाथों से संवारा, आश्रम प्यारा प्यारा अपने हाथों से संवारा। शांत मनोहर है पावन है, वन में बाबा का आसन है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे मधुबन है, मधुबन में बाबा का आसन है। बाबा की बगिया के फूल और कलियां, खुशबू के प्याले हैं मिस्री की रलियां। आ जाए एक बार यहाँ जो ना भाए उसे माया की गलियां। बाबा बच्चों को समझाते सब पे नेह रहो बरसाते, बाबा बच्चों को समझाते सब पे नेह रहो बरसाते। सबके लिए ये घर आंगन है, मधुबन में बाबा का आसन है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे मधुबन है, मधुबन में बाबा का आसन है। मुखड़े पे सबके है सच की ज्योति, ज्योति ये मंद कभी ना होती। सब है यहाँ पे अमन के फरिश्ते, मन की सीपी में ज्ञान के मोती। चारों ओर सफेदी झलके जैसे चांदनी सी झलके, चारों ओर सफेदी झलके जैसे चांदनी सी छलके। उज्ज्वल है तन निर्मल मन है, मधुबन में बाबा का आसन है, मधुबन में बाबा का आसन है। ओ बाबा सबसे निराले सबको प्यार करने वाले, बाबा सबसे निराले सबको प्यार करने वाले। सबके दिलों पे उनका शासन है, मधुबन में बाबा का आसन है। ऊंचे पहाड़ पे मधुबन है, मधुबन में बाबा का आसन है। मधुबन में बाबा का आसन है, मधुबन में बाबा का आसन है।
Om Shanti. Om Shanti. All the Sevadhari of Delhi and Agra zone, brothers and sisters, have come to Madhuban. So welcome to your sweet home, Madhuban. Today is 13 January 2023. Baba says you have to renounce your mind from the happiness of this old world. You have to tolerate happiness, sorrow, respect and disrespect. This birth of yours is highest than the deity birth. Because in this birth, you are with your father, your beloved father, and you children eat from the Shiv Baba's Bhandara. For instance, they say that by giving 2 handfuls of rice, Sudama got the sovereignty. Sweet essence, sweet children, here you have to tolerate happiness and sorrow, respect and disrespect. Remove the happiness of the old world from your intellects. Don't follow the dictates of your own mind. Question: how is this birth even better than that, a deity birth? Answer: at this time, you children are eating from Shiv Baba's Bhandara. You earn a lot of income here. You have taken refuge with the Father. It is in this birth that you make yourselves happy in this world and in the world beyond. You give 2 handfuls of rice, like Sudama did, and claim the sovereignty for 21 births. Song: whether you are near or far, you are the image of my dreams. Om Shanti. The meaning of the song is very good. The father sits here and explains to you children that whether you are sitting close to this body or you are far away, he is personally giving you the teaching of yoga. When Shiv Baba descends in Brahma Baba, whether you sit in front of him or you're far away, Baba gives you all the teachings. He does not give them through inspiration. I am close or whether I am far away, you still have to remember me. People do devotion in order to go to God.
The Father sits here and says, O living beings, souls who reside in those bodies, the Supreme Father, the Supreme Soul, sits here and speaks to souls. परमात्मा को आत्माओं से मिलना है जरूर। The Supreme Soul definitely has to meet souls. भगवान को याद करती हैं। Therefore, because they are unhappy, embodied souls remember God. क्योंकि दुखी हैं। No, सतयुग no one in the golden age remembers him. सतयुग में कोई दुखी नहीं है तो याद नहीं करते। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बहुत You children now know that you are very old devotees. जब से हमको माया ने पकड़ा है You began to remember God Shiva from the time Maya caught hold of you. माया ने पकड़ा है द्वापर युग से, तब से ही बाबा को याद करना शुरू किया। और पहले तो व्यभिचारी भक्ति ही थी। Maya caught hold of us from the Dwapar Yuga, from the Copper Age. So that is the time we started remembering the God. स्वर्ग का And we remember God because Shiv Baba had made you into the masters of the world. तो उनका यादगार बनाकर भक्ति करते हैं। श्री बाबा का यादगार So people create a memorial of him and do devotion. वो बाप सम्मुख आए हैं लेने के। You know that the Father has now personally come to take you back पास because you now have to go back to the Father. जब तक यहाँ है तब तक पुराने शरीर को, पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। While you are here, you have to remove old bodies and the old world from your intellects and stay in yoga. पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। तो इस योग अग्नि से पाप भस्म होंगे, इसमें मेहनत Your sins will be burnt in this fire of yoga. की प्राप्ति भी तो जब This requires effort. प्राप्ति होती है। विश्व का मालिक बनना है। मनुष्य कहते हैं The status you receive is great. You have to become masters of the world. का मालिक मनुष्य People say that Shiv Baba is the master of the world. को मालिक, But no, it is human beings who become the masters of the world. बाप बैठ बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। The Father sits here and makes you children into the masters of the world. He says, You were the masters of the world, and then, having taken 84 births, you are no longer the masters of even shells. और अब कलयुग के अंत तक आते आते कौड़ी के भी मालिक नहीं रहे। पहला नंबर जन्म और अभी का अंतिम जन्म देखो। There is a vast difference of day and night between your first birth and this last birth. कितना रात दिन का फर्क है, कोई को भी याद नहीं आ सकता। None of you is able to remember this until the Father comes and gives you a vision. ज्ञान बुद्धि से भी साक्षात्कार होता है। You can also have a vision through the intellect of knowledge, से भी हमें Gyan Buddhi. जो सयाने बच्चे हैं नित्य बाप को याद करते हैं। The children who are sensible and remember the Father every day enjoy themselves a great deal. यहाँ तुम सब नई बातें सुनते हो। Everything you listen to here is new. People don't know anything at all. कोड़े लगाते रहते शास्त्रों They continue to tell lies and wander from door to door. पर कोड़े लगाएंगे बाबा ने कहा। और दर दर धक्के खाते रहते हैं, कभी इस तीर्थ पर, कभी उस तीर्थ पर, कभी इस गुरु के पास, कभी उस
You wander from door to all the gurus. तुमको तो भटकने से छुड़ाया जाता है. The Father says, अब You एक have, ठिकाना मिल गया. you have been liberated from wandering. बाप कहते हैं तुम आत्मा हो, मुझ बाप को. The Father says, You souls have to remember me, the Father. बुद्धि में यही विचार रहे कि हम आत्माओं को. Let there be the thought in the intellects of you souls that you have to go to Baba. पुरानी सृष्टि तो खत्म हो जाएगी. It is as though this world doesn't exist for you. बनाएंगे. बुद्धि नई दुनिया This old world is to end. नए घर में जाने वाले, जैसे बाबा कहते हैं पुराने घर को छोड़ना होता है, नए घर बना रहे होते हैं. बुद्धि सारा. When you build a new home, you leave your old home. तो ये पुरानी सृष्टि तो खत्म हो जाएगी. फिर हम स्वर्ग में आकर नए महल बनाएंगे. रात दिन This old world is to end. चलना चाहिए. We will then go to heaven and build new places, new palaces. बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं. This should continue to turn around in your intellects day and night. अब नाटक The Father tells you his own experience. ये पुराना When I go to sleep at night, these are the thoughts I have. This play is now coming to an end. चोला छोटे से I have to shed this old body. विनाश करने. Yes, there is a lot of burden of sin. बाबा को This is why I have to remember Baba constantly. अपनी अवस्था को दर्पण में देखना है. Check your stage in the mirror. वो दर्पण में देखना है. कौन से दर्पण में? वो वाले दर्पण में नहीं. बाबा ने कहा हमारी बुद्धि Baba says you have to check your stage in the mirror of intellect. Is my intellect removed from everyone else? से काम ले सकते हो. While engaged in your business, etc., you can still use your intellect for this business. उन्हों का ख्याल रखना पड़ता है. वैसा नहीं कोई बाबा फ्री है इसीलिए बाबा अच्छा योग लगा सकते हैं. Baba has so many concerns. He has so many children. He has to think about all of them. बच्चों को पनाह देनी है. दुखी तो बहुत है ना. He has to give refuge to some children. कि वो मरते हैं. There are many who are unhappy. इस समय बहुत गहरा When there is upheaval, so many suffer and die. खेल चलता है. कभी भी किसी को भी ऐसे ही मार देते हैं. तो बच्चों को शरण देने के लिए मकान बन रहे हैं. यहाँ तो These times are very bad, therefore, this buildings is being built in order to give refuge to the children. It is for all my children who will stay here. There is no fear, and you also have the power of yoga. Some children have had visions. The Father protects those who remember Him very well. खिलाई घड़ी आई और बाबा Many children have these experiences. वो सामने वाले को ऐसा दिखा देते हैं कि रक्षा हो जाती है. दुश्मन को भयंकर रूप दिखाकर भगा देते हैं. The Baba protects them, those who remember him very well. He shows a fearsome form to enemies and makes them run away. बाबा की बजाय किसी और को याद किया तो For as long as you have those bodies, you have to stay in yoga. तब तक योग में रहना है, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी. Otherwise, there will have to be punishment. का बच्चा सजा खाता है. When the child of an eminent person is being sentenced, he has to look down. कान नीचे करना पड़ेगा. You too will have to look down. नौबत आई तो बाबा ने कहा कान नीचे करना पड़ेगा. अपना सिर नीचा करना पड़ेगा.
बच्चों के लिए तो और कड़ी सजाएं हैं For the children, कि the एकदम punishment बहुत is बड़ा even more दंड severe है उनका तो एक because for one action you get यहाँ है thousandfold कि return. आप भी अगर कर्म करते हैं तो 100 गुना In कर्म हो spite जाता है having knowledge, if you do wrong तो ये actions, you will कोई have very ऐसे severe भी हैं जो punishment. कहते अभी तो माया का सुख ले लें जो होगा There are तो even देखा such children जाएगा who say, well, बहुतों let me को take इस the happiness पुरानी of Maya दुनिया at के this time. सुख मीठे लगते I हैं will see about whatever is to happen later. यहाँ तो सुख दुख मान अपमान सब सहन करना पड़ता है Many find the happiness of this old मान world अपमान तो very sweet. होता ही है बाबा ने कहा ये सब सहन करना पड़ता है ऊंच प्राप्ति Here, अगर you have to चाहिए tolerate happiness तो and वो sorrow, करना चाहिए respect माँ and बाप के disrespect. फरमान पर चलना In order to achieve elevated attainments, you have to follow the mother अपनी and मत father. माना अपनी मत You माना should follow अपनी the मत मानना directions of mother मत माना and father. बाबा ने कहा Your own रावण की dictates means the dictates of सुख Ravan. लकीर को लकीर लगाने के लिए निकलेगी They would only अपनी be मत those कभी that कभी cross चढ़ाई out your नहीं fortune. बाबा से पूछेंगे तो बाबा झट कहेंगे ये आसुरी मत If you ask the father, Baba will quickly tell you, श्रीमत नहीं those directions are devilish. कदम This is कदम not पर Srimad. श्रीमत चाहिए कदम कदम पर You need Srimad बाबा की at every श्रीमत पर step. चलना है देखना है कहाँ उल्टा काम कर You should check that you are not performing wrong actions and giving the father a bad name. तब बनेंगे जब ऐसे लक्षण होंगे You will become deities ऐसे when नहीं you have वहाँ such automatic qualifications. लक्षण आ जाएंगे जो संस्कार यहाँ आत्मा में भरेंगे वही It isn't that you will automatically have those qualifications when you go there. वो देवताई गुण Baba says no. कर रहे हैं You have to imbibe the qualifications here itself. चलन चाहिए Your behavior has to be very sweet अगर here. समझो शिव बाबा ने नहीं ब्रह्मा बाबा ने कहा तो भी रिस्पॉन्सिबल ये रहेगा ना Even if Brahma Baba and not Shiv Baba said something, it is that one who is responsible. कहते हैं आप ऐसा करो तो बाबा ने कहा उसमें आपका कुछ नुकसान होता है आपको ऐसा लगता है तो भी रिस्पॉन्सिबल कौन है शिव बाबा ये है ड्रामा Even if there is some harm done, it doesn't matter. That was fixed in the drama, and so you cannot be blamed. A very good stage is needed. में रहे कि Although you are sitting here, वहाँ के let it remain in your intellects that you are the masters of Brahmand and also the residents of that place. उपराम रहेगी ये बाबा ने कहा इस रीति घर में रहते धंधा करते उपराम होते जाएंगे Stay at home and continue to do your business in this way, and you will continue to remain beyond. छोड़ना नहीं है लेकिन ग्रस्त में रहते उपराम कैसे होंगे बुद्धि में रहे कि हम परम धाम से आए हैं तुम तो सारी पुरानी दुनिया से उपराम होते हो Just as sannyasis पुरानी दुनिया से go beyond households, so you also go beyond the whole world of the old world. There is the difference of day and night between the renunciation of Hatha Yoga and this renunciation. सन्यासी सिखला न सके The father teaches this Raj Yoga. जीवन मुक्ति Sannyasis cannot teach it because the bestower of liberation and liberation in life is only the one. सभी की मुक्ति अब होनी है क्योंकि सब Everyone is now to have liberation because you now have to return home. के लिए
Sages make spiritual endeavor to go back. कोई फिर कहते हैं हम ज्योति ज्योत में समाए, अनेक You are unhappy here. Some then say that they want to merge into the light. कि कोई कोई बच्चे हैं जिन्हों को पुराने संबंधी There are innumerable opinions. Baba has explained that there are some children who still remember their relatives. When you want the happiness of this world, you die. की आश हुई और ये मरा, फिर उसका पैर यहाँ ठहर न सके। माया बहुत लालच देती है, अपना बनाने के लिए माया बहुत लालच देती है। आजकल तो कितने कितने आकर्षण हैं, माया का पॉम्प है। बाबा कहता है, एक कहावत है, भगवान को याद करो नहीं तो बाज आ जाएगा। There is a saying, remember God, otherwise the eagle will come. नहीं वो बाज है ना, अपने पंजे में जकड़ लेता है। बाबा कहते हैं माया भी अपने पंजे में। Maya to attack you like an eagle. अब जबकि बाप आए हैं तो अभी भी पुरुषार्थ कर उच्च पद नहीं पाया, तो कल्प कल्पांतर नहीं पाए। Now that the Father has come, you should make effort to claim a high status. Otherwise, you won't receive it cycle after cycle. Here, you don't receive any sorrow from the Father. Therefore, you have to forget the old world of sorrow. You should check your chart for the whole day. For how long did I remember the Father? Did I give the donation of life to anyone? बाप ने तुमको ही जियदान दिया है, The Father also gave you the donation of life. रास्ता बताया। बाबा कहते हैं अंधों की लाठी बने। सतयुग त्रेता तक तुम अमर रहते हो, यहाँ कोई मरता है। The Father also gave you the donation of life. Did He not? स्वर्ग You remain immortal in the golden and silver ages. When someone hears, dies, people weep and wail so much. There is no mention of sorrow in the heaven. They would think that they are shedding their old skins and taking new ones. ये मिसाल भी तुमसे लगता है और This example applies to you. No one else can give this example. They do not forget their old skin. They continue to save their money. बाप को देती हो वह Whatever you give to the Father here, He doesn't use it or keep it for Himself. बाबा के बच्चे करते हैं। तो बाबा ने कहा कोई बाप खुद थोड़े ही खाते या अपने पास रखते हैं, उनसे बच्चों की परवरिश करते हैं। He sustains the children with it. सच्चा सच्चा शिव बाबा का Therefore, this is Shiv Baba's true Bhandara. खाने वाले यहाँ भी सुखी। Those who eat from this Bhandara remain happy here and they will remain happy for birth after birth. बहुत दुर्लभ है। This birth of yours is invaluable. मनुष्य जन्म दुर्लभ है। बाबा ने कहा वास्तव में यादगार किसका है? संगम युग के जन्म का। संगम युग का ये जन्म Here you are even happier than in your deity birth क्योंकि बाप because you have taken refuge here with the Father. बाबा के पास बैठे हैं, बाबा साथ है। और तो पूरे कल्प में किसी जन्म में बाबा साथ नहीं है। The whole cycle, the Father is not with you just in this confluence age. The Father is with you. जन्म जन्मांतर You earn a lot of income here, which you will use for birth after birth. जन्मों के लिए Sudama received a palace for 21 births in return for two handful of rice. तो परलोक में He remained happy here and also in the world beyond के लिए for birth after birth. ये जन्म This is why this birth is very good. कोई कहते विनाश जल्दी हो तो हम स्वर्ग में चले।
Some say that if destruction takes place soon, we can go to the heaven. बाबा ने कहा, कोई कहते हैं बाबा को जल्दी जल्दी सतयुग आए ना, इतना क्यों लंबा हो रहा है। बच्चे अभी लायक कहाँ बने हैं, विनाश को लाने वाले कौन हैं। However, you still have to take many treasures from the Father. बनेंगे तभी विनाश नजदीक आएगा। तो बाबा ने कहा, बच्चे अभी लायक कहाँ बने, अभी तो बाप पढ़ाने के लिए आते रहते हैं। बाबा The kingdom has not yet been created, so how could destruction be made to take place soon? You children have not yet become worthy. The Father still continues to come to teach you. Baba's service is beyond limits. The Father's praise is also limitless. तो मेरी यादगार है ऊंचते ऊंच, To the extent that I am elevated, the service I do is also just as elevated. भाग्य बनाते हैं। That is why there is my memorial. ज्ञान रत्नों की Baba's Gaddi is the highest on high. धन बन जाता है। ये Whatever effort each of you makes, you create your fortune accordingly. This income is that of the imperishable wealth of knowledge, which becomes limitless wealth there. पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। Therefore, you children should make very good effort. Remember the Father here and also there. परम नाम की याद, सीढ़ी तो है ना, चढ़ना उतरना, ऊपर याद There is this ladder. Look in the mirror of your heart. To what extent am I worthy child of Father? अंधों को रास्ता बताता हूँ, Do I show the path to the blind? बातें करने में खुशी होती है। You experience happiness talking to yourself. बाबा अनुभव बताते हैं, सोता हूँ। Baba shares his own experience. पहले भी बाबा ने कहा, अपने आप से क्या बात करता हूँ। बाबा ने कहा, सोता हूँ तो भी बातें करता हूँ। बाबा आपकी तो कमाल है। भक्ति मार्ग में फिर हम आपको भूल ही जाएंगे। इतना वर्षा Your wonder. तो सतयुग में ये We will then forget you on the path of devotion. भक्ति मार्ग में आपका यादगार बनाएंगे। We receive such an inheritance from you, and we will then forget you in the golden age. Then we will build memorials to you on the path of devotion. जैसे बुद्धू अज्ञानी However, we completely forget your occupation at that time. It is as though we become ignorant Buddhas. अब बाप ने कितना ज्ञानी बना। The Father has now made you so knowledgeable. ईश्वर There is the difference of day and night. ज्ञान थोड़े ही है। To say that God is omnipresent is not knowledge. You need the knowledge of the world cycle. We are now completing the cycle of 84 births and are to return home, and we will then have to go into the liberation in life. ड्रामा से बाहर थोड़े ही निकल सकते। We cannot come out of the drama. ड्रामा से निकलना चाहे, पूरी तरह से मुक्त होना चाहे, तो बाबा ने कहा नहीं निकल सकते। एक जन्म भी आत्मा को लेना है जरूर। हम हैं ही जीवन मुक्ति के राही। We are the travelers of liberation in life. सीखी रहे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम Acha to the sweetest, beloved, long lost, and now found children. Love, remembrance, and good morning from the mother, the father, Bap Dada. The spiritual father says namaste to the spiritual children. And we spiritual children say namaste to the spiritual father. 16 दिसंबर 1968 की रात्रि क्लास। किसको बाबा बच्ची कहते हैं, किसको माया कहते हैं।
जरूर कुछ फर्क होगा। Night class, 16 December 1968. Baba calls some children daughters and some mothers. So, there definitely must be a difference. तो ऐसे फूल हैं, From the service of some, there is fragrance, whereas others are like uk flowers. ऊपर से The Father has explained it is as though you are with me. तुम्हारा The Father has कर्तव्य come from up above to purify the world. से जो पहले आते This is also your task. Those who come from there are the first pure. होती है, नए आते वैसे New ones who come must definitely be giving the fragrance. में भी नए नए पत्ते निकलते हैं तो अच्छे लगते हैं। Comparison is also made to a garden. जैसी सर्विस वैसी As is the service, so is the fragrance of the flowers. विवेक कहता है शिव बाबा का बच्चा कहलाया The conscience says, as soon as you are called a child of Shiv Baba, you claim a right. खुशबू आनी चाहिए, So, there should be that fragrance. कहते हैं वो आनी चाहिए। हकदार हैं तब तो सभी को नमस्ते करते हैं, बाबा सभी बच्चों को नमस्ते करते हैं। It is because you have a right that Baba says Namaste to everyone. पढ़ाई में You definitely do become the masters of the world. But there is a lot of difference in how you study. चाहता है ये बाबा There are both types of these. You children have the faith that this is Baba, and you also have the cycle in your intellects. So, the Father says, what more can I tell you? No one except the Father can make you the spinners of the discus of self-realization. बना नहीं सकता। बनते हैं इशारे से जो कन You become that with just a signal. Those who became that in the previous cycle will become that again. पवित्रता Many children come here. दिया चाह There is so much assault because of purity. द्वारा बाप गीता सुना The one through whom the Father speaks the Gita is insulted so much. कलंक भी लगे बाबा के ऊपर। शिव बाबा को भी गाली देते हैं Shiv Baba is also insulted so much. तो गाली To say that he incarnates in a fish and a crocodile is also insulting him, is it not? मतलब तो बाबा ने कहा ये भी जैसे गाली देना है बाबा को। न जानने के कारण बाप पर Because of not having knowledge, they accuse you so much. बच्चे कितना माथा मारते हैं। Children beat their heads so much. एक आत्मा को बाबा का बच्चा बनाने में मेहनत होती है। पढ़ाई से कोई तो बहुत साहूकार हो जाते हैं। Some become very wealthy by studying. मेरी लौकिक पढ़ाई से कोई बहुत कमाते हैं। They earn so much, they receive 2 to 4,000 for just one operation. Whereas others तो 2,000 4,000 तो डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस ही होती है। जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी इतनी फीस ही होती है। But in today's day, 2,000 to 4,000 is just the consolation fees. कर सकते कोई डॉक्टर तो कुटुंब की पालना भी नहीं कर सकते है ना। कोई जन्म जन्मांतर Baba says, whereas others are not even able to take care of their family. गरीब बनते हैं, It is something to worry about. संसार पद मिलता है। Some claim a sovereignty for birth after birth, whereas others remain poor for birth after birth. The Father says, I am making you sensible. Now you would say for everything. Drama. हुआ सो ड्रामा It is everyone's part. Whatever happened in the past is the drama. बनी नहीं ऐसे ही कहते हैं। ड्रामा अनुसार जो
Whatever happened in the past is drama. Only that which is in the drama takes place. Whatever happens according to the drama is fine. No matter how much we explain, they do not understand. Very good manners are needed for this. Each one of you should check within yourself. Do I have any defects? Maya is very strong. Maya has to be removed somehow. All defects have to be removed. The Father says, those who are in bondage remember me the most. They are the ones who claim a good status. The more they are beaten, the more they stay in remembrance. O Shiv Baba emerges from them. They remember Shiv Baba with knowledge. Their charts are also good. बाबा ने कहा ऐसे जो मार खाकर आते हैं वे सर्विस में भी अच्छे लग जाते हैं क्योंकि परीक्षा देकर के आते ना मुश्किल से निकलते हैं तो उनकी लगन अपने आप अच्छी रहती है. Those who come here having been beaten also do good service. They do very good service to make their lives good. If they don't do service, the consciences would bite. The heart desires that they go out on service. Although they understand that they will have to leave their center to go on service. There is a lot of service to be done at the exhibitions. Therefore, you should not be concerned about the center, but run to do the service. The more we donate, the more we will fill ourselves with power. You definitely have to donate. These are the imperishable jewels of knowledge. Those who have them will also donate them. You children should now be able to remember the knowledge of the beginning, the middle, and the end of the whole world. The whole cycle should rotate in your intellects. The Father also knows the beginning, middle, and the end of this world. He is definitely the ocean of knowledge. He knows the world cycle. This knowledge is completely new for the world and it never becomes old. It is wonderful knowledge and only the Father tells it to us. No matter how much of a saint or a great soul someone is, none of them is able to climb up the ladder. Only the Father. No human being can grant liberation and salvation. Neither human beings nor deities can give those. Only the one Father can give those. There has to be expansion day by day. Baba has said you should have the pictures of Lakshmi and Narayan and the ladder in the translate form in the touring exhibition. There should be something electrical through which there is always a light shining. Also,
continue to speak the slogans. Only the Supreme Father, the Supreme Soul, teaches Raj Yoga through the lucky chariot. ऐसा ऐसा आवाज बहुत You will hear such sounds. Acha, good night to the sweetest children. रात्रि क्लास तीसरी बाबा ने गुड नाइट बोला प्रार्थना के लिए Essence for Dharana. First point. पहला है अब ये नाटक पूरा हो रहा है This play is now coming to an end. दुनिया से विराम लेना Therefore, remain beyond this old world. श्रीमत पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी Make your fortune elevated by following Srimad. कोई उल्टा कर्म नहीं करना है Never perform wrong actions. दूसरा है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करनी और करानी है Second point, earn and inspire others to earn an income of the imperishable jewel of knowledge. अनेकों को रास्ता बताना है Stay in remembrance of one Father. Become a worthy child and show the path to many others. तपस्या के वातावरण द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले सच्चे सेवाधारी हों Blessing. और तपस्या May you be a true server and become a destroyer of obstacles and create an atmosphere of renunciation and tapasya. बाप का सबसे बड़े से बड़ा टाइटल है The Father's biggest title is World Servant. वर्ल्ड सर्वेंट विश्व सेवा हिंदी में कहेंगे विश्व सेवाधारी वैसे बच्चे भी वर्ल्ड सर्वेंट In the same way, children are also world servants. सेवाधारी That is, servers. सेवाधारी A server means a renunciate and a tapasvi. जहाँ त्याग और तपस्या है वहाँ भाग्य तो When someone has renunciation and tapasya, fortune comes in front of that one like a servant. बाबा ने कहा जहाँ त्याग और तपस्या है वहाँ भाग्य तो उनके आगे दासी के समान आता ही है सेवाधारी देने Servers are those who give, वाले नहीं not those who take, and they therefore remain constantly free from the obstacles. अपेक्षा नहीं करते कि इनसे बोले तो निर्विघ्न हो जाते हैं By considering yourself to be a server and creating an atmosphere of renunciation and tapasya, you will constantly be a destroyer of obstacles. सेवाधारी समझकर त्याग और तपस्या का वातावरण बनाने से सदा विघ्न विनाशक रहेंगे स्लोगन है किसी Slogan. भी परिस्थिति का सामना करने का साधन है स्व स्थिति की शक्ति The way to face any situation is to use the power of your own stage. स्व स्थिति की शक्ति आज काव्य की शायरी की पॉइंट है Avyakt signal. जब आत्मिक शक्ति वाली सेमी प्योर आत्माएं Souls with their own soul power, आत्माओं का semi-pure souls through their spiritual endeavor are able to invoke souls आत्माओं with the limited facilities, able to show their miracles to souls sitting far away and attract those souls to them. सर्वश्रेष्ठ शक्ति क्या नहीं कर सकती So, what can God's power, that is, the most elevated power, not do? का अभ्यास But for this, especially increase the power of concentration. ही जब एकाग्रता का अभ्यास होगा जैसे शक्तियों के जड़ चित्रों Just as in the pictures of deities, हस्तों के रूप में दिखाया है
The symbol of giving blessings is depicted by their hands. वरदान का पोज The hands are also shown to be still. In the pose of blessing, the hands, drishti, and thoughts are shown to be concentrated. सेकंड में जैसे उस आत्मा को शक्ति मिल जाती है। तो बाबा ने कहा ऐसे चैतन्य रूप में Similarly, शक्ति को बढ़ाओ। तब Similarly, in the living form, increase the power of concentration, and then souls will be able to invoke souls and spiritually serve them. और 18 जनवरी का होमवर्क है आज का। मैं तख्त नशीन आत्मा समान है। Today's self respect. नशीन आत्मा हूँ और चिंतन है। परमात्मा की तख्त नशीन स्थिति क्या है? I reside स्थिति में रहने in the immortal throne. I am a soul who reside in the immortal throne. Thoughts. अभ्यास योग अभ्यास How can I stay in the throne of Bap Dada's heart? मैं स्वराज Practice of yoga. आत्मा I am seated पर सूक्ष्म in the middle of my forehead, and I am seated in my immortal throne. तख्त नशीन परमात्मा प्यार की All my physical and subtle organs तख्त नशीन आत्मा are controlled. इस स्मृति में बैठ योग अभ्यास By sitting in the throne of Bap Dada's heart and getting involved in Father's love, we have to become the self. ओम शांति। We have to become the Swaraj Adhikari. और अमृत वेला योग डायमंड हॉल में रहेगा। शाम का योग 6 से 8 यहाँ डायमंड हॉल में ही चलेगा। डायमंड हॉल की सेवा के लिए आए हुए Amritvela meditation and evening meditation will be in the Diamond Hall. सेवाधारी डायमंड हॉल के लिए आए हैं। 9 बजे सेवा के लिए डायमंड हॉल में All the Sevadaris of Diamond Hall जम्मू से assemble कुमारी रिमझिम in Diamond Hall करेगी। at 9 a.m. बोल है दिल को कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए गीत में सुनो।
तेरी शिक्षाएं भरती है अनोखा बल मुझ में। अब सारे रिश्ते ओ बाबा मुझे आते नजर हर पल तुझ में। फिर माथे तेरी शिक्षाएं भरती है अनोखा बल मुझ में। अब सारे रिश्ते ओ बाबा मुझे आते नजर हर पल तुझ में। अब तेरे लिए ओ बाबा ना कोई बहाना है। ओ मेरे मीठे बाबा बस तू ही मेरा खजाना है। ओ मेरे मीठे बाबा बस तू ही मेरा खजाना है। तेरी यादें मन को कर देती मेरे बाबा परम पवित्र। मुझे नाज है खुद पर ओ बाबा तू बना जो मेरा मित्र। तेरी यादें मन को कर देती मेरे बाबा परम पवित्र। मुझे नाज है खुद पर ओ बाबा तू बना जो मेरा मित्र। कब जान लियूं ही तुझको मैंने जो जाना है। ओ मेरे मीठे बाबा बस तू ही मेरा खजाना है। ओ मेरे मीठे बाबा बस तू ही मेरा खजाना है। तू ही मेरा खजाना है। बस तू ही मेरा खजाना है। तू ही मेरा खजाना है। याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। मधुबन का हर कण कहता है, हम बच्चों का मन कहता है। याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। हे सृष्टि के आदि पिता ब्रह्मा बाबा, प्यारे प्यारे बाबा। कितने अच्छे हमको लगते आँखों के तारे तुम बाबा, कितना ही प्यार दिया बाबा, बाबा याद तुम्हारी आती है। याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। साकार बिना सुना लगता बाबा, प्यारा तेरा ये उपवन।
संसार बदलने वाले बाबा याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। दिन जनवरी 18 का जो जो करीब आने लगता, तेरी यादें बढ़ने लगती है, मन नई प्रेरणा है पाता। हे नवजीवन देने वाले बाबा याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। मधुबन का हर कण कहता है, हम बच्चों का मन कहता है, याद तुम्हारी आती है, याद